morning, students. Myself Ramdas Yadav from the South Science Senior Secondary School, Gazipur. Students, today we will discuss about biology of standard 10. The topic is nutrition in human. Students, today we will discuss about how nutrition in human take place. In nutrition in human is holozoic type. Holozoic nutrition. Students, you know that holozoic nutrition completed in different types of steps like ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, students, the alimentary canal of human being or digestive tract or gut. The digestive tract of human being is also known as alimentary canal of human being or gut of human being. It consists of different parts like first one is buccal cavity, this one is buccal cavity, and here is pharynx. Pharynx is the common process of buccal cavity and nasal cavity. This one is nasal cavity. Nasal cavity. Pharynx and pharynx followed by esophagus or also known as food pipe. Beside food pipe, windpipe or trachea is located, and this esophagus is further open into stomach. This is stomach through sphincter valve. Here is sphincter valve, and this stomach is followed by mucus layer which secretes mucus and enzymes known as pepsin, renin and HCl. Okay, students, and further stomach opens into structure, C-shaped structure named duodenum, which is a part of small intestine, and small duodenum further open into jejunum. Jejunum is also part of small intestine, and jejunum is further open into ileum. Ileum is the last part of small intestine, and through ileum open into large intestine. Large intestine have three parts: cecum, colon and rectum. Okay, students, one by one we will discuss in what way digestion or ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion takes place in human beings. Okay, so first ingestion. Ingestion takes place through mouth. Mouth is thin slits bounded by movable lips. माउथ क्या है? पतला पतली गुहा होती है जो कि मूवेबल गतिमान लिप्स होठों के द्वारा बंधा होता है. इट फर्दर लीड्स इनटू बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी मीन्स मुख गुहा या ओरल कैविटी. इन ओरल कैविटी देयर आर teeth, tongue,
and salivary glands also. Glands also located. Teeth are solid part of buccal cavity. Teeth are four types: incisor, canine, premolar, and molar. Its formula is 2 1 2 3. 2 1 2 3. This is the first half, and into totally 22. Okay, students, the function of teeth crush food into small particles. teeth दांत जो है वह फूड को क्रश करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं एंड सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स सलाइवरी एमाइलेज which is slightly alkaline. It's 7.2 and salivary amylase converts starch into glucose. Glucose में कन्वर्ट करता है here muscular organ, fleshy organ, which function is it helps to swallow food particles. यह भोजन को मिक्स करता है एंड निगलने में सहायता करता है. अब देखिए here is buccal cavity and here is nasal cavity and here pharynx. ये क्या है? ग्रसनी है और यह ग्रसनी pharynx जो दिस इज कॉमन प्रोसेस फॉर buccal cavity and nasal cavity and here one flat line structure which is known as epiglottis. Epiglottis prevents to entering the food particles into windpipe. Epiglottis फूड को ट्रैकिया में जाने से क्या करता है? रोकता है. अब देखिए and students further you see the length of the human alimentary canal is or human digestive tract or human digestive gut is about 9 meter long. The alimentary canal of human being is about 9 meter long. And through in esophagus, food pipe or vaginally, in food pipe there is no digestion takes place. A movement occur named peristalsis. In esophagus a movement always occur which is known as
पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टैल्सिस movement. The rhythmic, what is peristalsis movement? The rhythmic contraction and relaxation of muscles is known as peristalsis movement. So when due to peristalsis movement, the food particle, the bolus, moves forward into the stomach, and when food comes in stomach, here in stomach, some chemicals release out like enzyme which is known as pepsin and renin, and here the serum and mucus. Okay, students, when bolus comes into stomach through epithelial lining of the stomach, enzyme secret which is known as pepsin and renin, they are inactive form. When it secretes through stomach wall, they are in inactive form due to the effect of HCl, hydrochloric acid. They become active state, means they secretes into pepsinogen, and due to the effect of acid they converted into pepsin, and its digest protein. यह जो पेप्सिनोजन पेप्सिन है वह प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एमिनो एसिड को कन्वर्ट करता है, और यह रेनिन यह मिल्क प्रोटीन which is known as casein प्रोटीन इसको कन्वर्ट करता है. अब देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl. HCl it makes the food medium acidic, and also kill the germs present in the food. And mucus, what is the function of mucus? Mucus prevent the stomach wall. Mucus, it prevents the stomach wall due to wall against harmful effect of HCl. यह म्यूकस जो है HCl के हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर फूड टर्न्स इनटू काइन ड्यू टू दिस एक्टिविटी. इन सब केमिकल्स के द्वारा फूड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, काइन में कन्वर्ट हो जाता है. एंड आफ्टर स्टमक फूड हियर काइन में, उसके बाद यह डियोडेनम में आता है. डियोडेनम यह स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, प्रीवियस पार्ट है, जहां पर यह
लीवर से, गॉल ब्लैडर से अटैच होता है। एंड हियर पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है। देखिए, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लीवर। Liver. It is the largest gland of the body, weight around 1.5 kg. It is slightly reddish in color and bilobed, दो लोग होते हैं। and it is made up of hepatic cells। हेपेटिक सेल्स, यह हेपेटिक सेल से बना होता है। इसमें इट secretes bile which emulsify fat। यह बाइल को सिक्रेट करता है एंड यह बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। एंड बाइल का फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? इट इमल्सिफाइड फैट्स, यह फैट को सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज द क्वेश्चन इज राइजिंग दैट व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? मींस इमल्सिफिकेशन इज द breakdown of fat molecules into fatty acid and glycerol. The process is known as emulsification. And here pancreas, now students, pancreas, it is the second largest gland of the human body, and it acts as exocrine and endocrine gland. That is why it is also known as mixed gland. It secretes, now you further see it secretes pancreatic trypsin, pancreatic lipase, pancreatic amylase. Okay, students, pancreatic trypsin acts on remaining protein। यह रिमेनिंग प्रोटीन बचा रहता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। एंड द एंजाइम्स आर एल्कलाइन। ये जो पैंक्रियाटिक जूस है
वह क्या है, एल्कलाइन इन नेचर। एंड हियर एसिडिक, यहाँ फूड एसिडिक होता है, यहाँ से सिक्रेशन जो होता है वह इसका सिक्रेशन बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूसेस आर एल्कलाइन इन नेचर एंड इट टर्न्स द मीडियम ऑफ फूड इज न्यूट्रल या न्यूट्रल कर देता है फूड के मीडियम। अब देखिए एक्ट्स ऑन पैंक्रियाटिक लाइपिड, एक्ट्स ऑन रिमेनिंग फैट्स, बचे हुए रिमेनिंग फैट का साफ डाइजेस्ट करता है। एंड हियर पैंक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट और ब्रेक्स रिमेनिंग starch. Okay students, and this is the exocrine part. It is here, it secretes from exocrine part of pancreas. एक्टोक्राइन भाग से एंडोक्राइन से और सीक्रेट होता है। एंडोक्राइन पार्ट जो है वह बनाता है आइस लेट्स लैंगरहैंस से बने होते हैं। लैंगरहैंस से जो कि सीक्रेट करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन या ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को यह डिक्रीज करता है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है और यह क्या करता है, इंक्रीज करता है, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ओके स्टूडेंट्स, हियर मेजर डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर इन duodenum and now in jejunum the absorption takes place, absorption and assimilation takes place, and after duodenum food enters into jejunum where absorption takes place and the walls of jejunum is made up of finger-like projections which is richly supplied with the finger-like projections which is known as villi or villus. Okay students, after that food enters into jejunum and ileum. Jejunum is composed of finger-like projections which are known as villi, and villi are richly supplied with thin blood capillaries where digested food nutrients are absorbed through thin blood capillaries. Okay students, and further on food enters into large intestine through ileum. Large intestine is composed of three parts: cecum, ascending colon, structure which is known as colon. Here is the ascending colon and here is descending colon. In a large intestine, the remaining digested food like salt water become absorbed, and after that food reaches here undigested food. Next one is after large intestine food reaches to the rectum. In rectum the undigested food is stored as stool, और रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वह स्टूल के रूप में स्टोर कर लेता है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एनस। अनडाइजेस्टेड फूड और stool is eliminated from the body
एनस से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वह बॉडी से रिलीज आउट कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे we have discussed about nutrition in human beings. If you have any type of query, then you may concern through write your question in comment box or with your WhatsApp. Okay, thank you. Have a nice day.